number language sangmalia some details dele tachidan sama cancer kyamurum jetana nimani ringa dililia ani nangbe gi chuzo delia ani chibgyu kya yore ngazo shilong mimania ani ta kyamurum chelia ken da pache de ke mayu chedu ya nimani ringa ngazo sani shilong leya shoge chuze gubani gonda chuze ngawa padu chojo gi legyu ji samsha
The Tibetan community has gathered here today to hold a two-day prayer meeting for His Holiness's well-being and to express their solidarity with His Holiness against the falsification of truth by the media through their sensationalization of the altered video that they created to defame His Holiness and to portray him in a bad light and to create a false narrative that his engagement, his innocent, playful engagement with an Indian boy as perversive. So we would like to express our discontentment with the media's unethical practice, and although this is a single event, we would like to say that we will continue to stand with His Holiness and continue this kind of movement event until the medias apologize to His Holiness. 상물로 테스트에 다른 것들이 신호선에야 다른 리마운드 좀 제시 아니 제가 미루로 조대 다다래들이야 상매 계세는 진호 것도 겸 좀 처리야 아니 심의 근지대 제가다 나는 시기다 단대게들이 아니 진호 것도 겸 좀 쳐 아니 달리야 그세니 제절도 짜도 섬데 딜이야 아니 차원로 용하다 아니 단대게 내도되다 오늘 경험 발전을 소모는 시기들이 먼저 제가 야고 중에 미디어도 데이터리 샤데다 아니 되게 최저 돌아 얘기 좀 스피기 유슈이 Media, stop the false allegation. We stand with His Holiness the 14th Dalai Lama of Tibet. Stop defaming His Holiness the Dalai Lama. Stop misinterpretation. तिब्बती समाज के सारे तिब्बती भाई बहनें हमारे शिलोंग के लुम्परिंग मंदिर में जमा है। हम यहाँ पर जमा होने का कारण ये है कि एक निजी चैनल ने हमारे पूज्य परम दलाई लामा जी पर अभद्र टिप्पणी की है, जिसके विरोध जताने के लिए हम सब तिब्बती समाज के भाई बहनें अपने तमाम काम काज छोड़ के हम मंदिर में जमा हैं, विरोध प्रकट कर रहे हैं और हम अपने तरफ से प्रार्थना सभाएं रख रहे हैं ताकि हमारे दलाई लामा जी को भी शांति पहुंचे, हमारे समाज में भी शांति रहे, क्योंकि हमारे समाज सब बहुत दुखी है। जो हाल फिलहाल जो हमारे मीडिया में चल रहा है उसके कारण सारे तिब्बती भाई बहन बहुत ही दुखी है। इस कारण हम लोग आज हम दलाई लामा जी के साथ देने के लिए, आज हम उनके साथ खड़े हैं, ये जताने के लिए हम मंदिर में इकट्ठा हुए हैं। और हम ये उन मीडिया पर्सन को हम बोलते हैं कि हमारे समाज हमारे दलाई लामा जी से माफ़ी मांगे, जो उन्होंने कहा है गलत टिप्पणी की है, और हमारे समाज को इस दुख से मुक्ति दिलाए। धन्यवाद। We stand with His Holiness the 14th Dalai Lama. Stop defaming. Stop misinterpretation. Amen.